Welcome to our class 7th students, and welcome to our course which is based on your book Hello Deutsch, and this is as per the syllabus of the book. Since this is the first video of the course, I just want to explain you the structure. So every in this course we will take up your chapters from the book, and from every chapter we will explain the grammar concept, and we will also do the analysis of the structure of that grammar concept in your Lehrbuch and Arbeitsbuch, which means that first we will learn the grammar concepts, and then we will see that how these grammar concepts being explained to you in the book with the help of particular topic, right? So as you can see, this question is, we have a special verb here in the title of the chapter itself. Was ist du in der Pause? So the verb we have here is essen, and this has been conjugated with du. Was ist du in der Pause? Okay, so this is the topic through to which we will understand a lot of sentence structure and learn the vocabulary and the grammar concepts which will come. I'll explain you beforehand. So let's start with the chapter itself. That what all the topics we are going to cover, we will cover the verb essen and nehmen, and we will do the accusative. I'm sure that you have done the accusative as a concept in the previous classes also, but understanding the concepts and using it correctly, it always takes time. And accusative is not limited to definite and indefinite article. You also have other concepts related to accusative. That's why it's very, very important that you have a good command on this concept. So we are going to do that also, and we will do the negation. Negation, as you know, when we are using kein, and with verbs we are using nicht. So we'll also do this with the accusative concept as well. And as I have already explained you, that we will do the Lektion from course book and Übung from Arbeitsbuch. So I am looking forward that you'll have fun, and I always have fun when I'm teaching students, and I'm hoping then the concepts are clear to the students. So it's a lot of fun as a teacher, and let's start then with the fun part. So as I've told you that we have two verbs here with which we will understand the concept of accusative. One is essen and the other one is nehmen. Essen is a verb. So essen, आपने ये भी सीखा है that essen is also a noun, right? We say das Essen ist sehr gut, das Essen ist kalt, or das Essen ist heiß. So हमने noun की तरह सीखा है, but essen is also a verb. So ये food भी है, and this is also a verb when we say to eat. Okay, so I don't eat today, ich esse heute nicht. Yeah, I eat pizza, ich esse pizza. Okay, so essen as a meaning is clear. So we have, when it comes as das Essen, क्योंकि वर्ब के ये नाउन के साथ आ रहा है जिसका आर्टिकल दास है, सो विल यूज इट एज अ नाउन, बस एसन एज अ वर्ब. ओके, नाउ द अदर वर्ब इज नेमन. नेमन इज टू टेक. जैसे ich nehme das Buch nicht, I don't take this book. Yeah, ich nehmen, आप अगर जो देखोगे, nehmen is very important to understand, because nehmen is also used as a later you will understand that nehmen is also used with lot of prefixes which has lot of different meanings as a verb. but यहाँ पे हम एक root verb की तरह इसको सीख रहे हैं. nehmen is to take, किसी चीज को लेना is nehmen. yeah, I don't take tea, ich nehme keinen Tee, ich nehme das Buch nicht, as I have said. okay, and हम इसको बहुत अलग तरीके से भी यूज करते हैं verb को. but the point is that when we know the verbs conjugations, right, तो यहाँ पे हमें इसको separately इन verbs को सीखने की क्या ज़रूरत है. So here you have an answer. When we are using essen as a verb and nehmen as a verb, this is what we need to keep it in mind,
राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो ये वर्ब्स जो हैं अपना कॉन्जुगेशन, सॉरी मेरा बहुत ही पेन डिफरेंट मूव कर रहा है, बट सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, अगर जो किसी ने somebody has done the 4th, 5th, 6th or any of these courses with us, they know there is a difference between a regular verb and a irregular verb, और जर्मन में हम बोलते हैं starke Verben and schwache Verben, strong verbs and weak verbs. strong verbs वो होती हैं जो इस तरीके से बिहेव करती हैं, जब हम इनको कॉन्जुगेट करते हैं, when we conjugate them, then they change their spelling, something they change. okay, इश्क के साथ कभी भी ये changes नहीं होते, but when we conjugate them with do or we conjugate them with third person, तो वहाँ पे they bring some changes, either they क्या हो जाता है, या तो umlaut लगा लेते हैं, या फिर schreiben schrieben ऐसी आई ई और ई की साउंड चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे you see they are changing them completely, right? तो इनकी कॉन्जुगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आई वुड से एक कॉन्सेप्ट सीखने में देयर इज नो हार्म, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने में कि एसन एंड नेमन आर इररेगुलर वर्ब्स और दे आर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. अभी से ये सीखोगे दिस कॉन्सेप्ट, दिस ऑब्जर्वेशंस अभी से, when you start observing such verbs, it will definitely help you with the future concepts. okay, so when I see the conjugation, of course they are following. देखिए सबसे पहले conjugation की आदत डालने में आपको सिर्फ conjugations कहाँ ध्यान देनी होती हैं, हमको 3 एंडिंग्स याद रखनी है. ई एंडिंग जो इश के साथ है, एस टी एंडिंग जो डू के साथ है, टी एंडिंग और ई एन एंडिंग. यही एंडिंग्स हैं जो conjugations के साथ लगती हैं. करेक्ट. अब इश के साथ ई लगना है हमेशा, जितने भी प्लूरल फॉर्म्स हैं उनके साथ ई एन लग रहा है, सिर्फ ईयर एक एक्सेप्शन है जिसमें टी लगता है, और जो थर्ड पर्सन है उनके साथ भी टी लगना है. सो कॉन्जुगेशंस आई थिंक बहुत ईजी होती हैं हमेशा दिमाग में रखना और यूज करना. एंड व्हाट आई ऑलवेज एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स, आपने ये सीख लिया, नाउ यू हैव सीन, ओके आई रिमेंबर दिस कि ये कॉन्जुगेशन लगता है, हाउ विल इट कम इन योर राइटिंग, कैसे आएगा ये कॉन्सेप्ट, समझना इज वन थिंग. सो लैंग्वेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग. इफ आई नो मैं खाती हूँ होता है, मैंने पढ़ के समझ लिया, मैं खाती हूँ इज अ सेंटेंस, आई ईट, बट इफ आई एम नॉट यूजिंग इट, इफ आई एम नॉट राइटिंग इट, if I'm not speaking this sentence, if I'm not seeing it somewhere written, if I'm not watching where it's used, I cannot remember it all the time. okay, so it's very important that you have learned some concepts, then keep using them. okay, so conjugations, again I'm saying, only you have to remember 4 endings, e en, st and t. now I need to understand different people also, that I hai e, do hai st, all plurals they have en, and the singular concept, the plural concept which also has an exception is ear. okay, ear is the most difficult form people get into the habit of speaking. okay, क्योंकि बहुत easy है जी के साथ sentence बनाते रहना हमेशा. okay, because we know en है, haben Sie ein Buch, lernen Sie Deutsch, hören Sie Musik. But if you are saying this and you know these two are my friends, then आप उनके साथ आप कह के हमेशा नहीं एड्रेस करते हो. The right form is hier. Lernt ihr Deutsch, hört ihr Musik, habt ihr ein Buch? Yeah? So please spend time with these structures. okay, now I come to the point again. essen and nehmen, they change themselves. where do they change? कहाँ पे याद रखना है चेंज को? यहाँ पे do के साथ. ich esse, ich nehme, wir essen, wir nehmen, that's okay. du isst, du nimmst, ihr esst, ihr nehmt. so यहाँ पे वो अपना फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, that's not a problem. sie essen, sie nehmen, sie essen, sie nehmen. के साथ अगेन यहाँ पे हमारा सेम. do always helps with these verbs with the third person also. do का conjugation याद रहेगा तो वहाँ पे हम third person को भी follow कर पाएंगे. okay, good to go. now let's go to the next.
Why I'm doing these verbs and what about accusative, right? Accusative I have explained you already. So let's do the explanation one more time. We have the sentence structure which is nominative and accusative. Nominative कौन से सेंटेंस होते हैं? Nominative हमारे सब्जेक्ट होते हैं, राइट? अब कोई पूछेगा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमेशा इंसान होता है. क्या होते हैं सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? तो हमारे सेंटेंस जिस चीज पे बेस्ड है, इट कुड बी अ पर्सन, it could be an object, that is my subject. और subject के according ही हमारी verb conjugate होती है. Even we have a sentence structure which is an accusative sentence structure, but we cannot have a sentence. We can have a sentence without accusative, but we cannot have a sentence without nominative. Okay. For example, मैं कुछ sentences अपने बारे में बनाती हूँ and आप उनको सुनिए और देखिए कि क्या हमारे. फॉर एग्जाम्पल, इश बिन संजू, ठीक है, ये मेरा नॉमिनेटिव सेंटेंस है. क्यों? मेरे बारे में ही है. ओके. इश वोन इन इंडियन, ठीक है. अगेन कोई और ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा ना इसमें. नाउ आई से ए फ्यू थिंग्स. Ich habe ein Haus. आप कहेंगे ये भी तो मेरे बारे में ही सेंटेंस है. बिल्कुल सही है कि मेरे बारे में सेंटेंस है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं लिख रही हूँ, राइट? Ich habe ein Haus. Ich bin संजू, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. Ich wohne in Indian. In Indian मेरी एक इंफॉर्मेशन है कहाँ मैं रहती हूँ. It doesn't say I have this, I have that. The moment I come into that structure जहाँ पे मैं हूँ और एक ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर फॉलो होता है accusative एंड नॉमिनेटिव स्ट्रक्चर में. करेक्ट? नॉमिनेटिव क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. आइन हाउस क्या है? accusative है. और बहुत सारे तरीके हैं आपको आइडेंटिफाई करने के एक सेंटेंस में कि क्या मेरा सब्जेक्ट है और क्या मेरा ऑब्जेक्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव एक्सप्लेन दैट माई वर्ब इज ऑलवेज कॉन्जुगेटेड एज पर माई नॉमिनेटिव. ठीक है? दिस ऑल्सो टेल्स मी व्हाट इज माई सब्जेक्ट. Second thing is that if you ask two questions, who has the house? Who has a house? That is always answered by, sorry, not the subject. Let's use the German term, which is nominative. And what is always answered with accusative. ऐसा भी होता है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होइए, कि कई बार हमारे पास सेंटेंस में दो इंसान भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ich treffe meine Mutter. So it's not कि ऑब्जेक्ट ही है accusative. यहाँ पे I meet my mother, मेरा treffen verb है. treffen is the verb to meet. ish है कौन? अगेन देखो verb conjugate हुई है as per the nominative. And whom I'm meeting, that's my accusative. Would have been a masculine, तो क्या चेंजेस होते हैं? अगर यहाँ पे आई एम मीटिंग माई फादर और आई एम मीटिंग माई ब्रदर, देन इट शुड हैव फॉलोड द एन एंडिंग, राइट? जो द फॉर्मूला ऑफ accusative is that the masculine object which comes into the structure of accusative, कोई भी चीज जो मैस्कुलिन है और वो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आ रही है, then we have to change the article of that object. अगर जो masculine definite article लगा रहे हो, then you will say den. if आप अगर जो एक indefinite article लगा रहे हो, then you will say einen. For example, ich habe einen Fernseher. Fernseher क्योंकि वो masculine object होता है. So ich habe einen Fernseher. So that is my einen क्या है? Indefinite article है. Correct? Definite article, indefinite article we have explained. The and a or an, right? The boy is big, that's definite. Der Junge ist groß. I have an old TV. Ich habe einen alten Fernseher, that is accusative. ठीक है? Masculine.
what we have learnt, देखिए बहुत easy है, बहुत easy है German सीखना. I would say that German has logics, German has rules which you understand, you can follow easily, and German is so clear with this grammar structure. It is so simple that I have a sentence which has a subject, I'll follow nominative. I have a sentence in which I have a subject and an object, I'll follow the accusative object. And for the accusative mein, we will only change masculine, der to den and ein to einen. Okay, I'll do a lot of sentence making with you जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि क्या है. और हम ये भी देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, accusative is also limited to certain verbs. हर एक के साथ तो हम accusative नहीं लगा सकते किसी भी चीज में. when we are saying I have this follows the accusative structure, क्योंकि आप I have के साथ sentence नहीं बना सकते. it's not a complete sentence, right? what I have, you have to have what, that is accusative structure, right? I eat, that's a complete sentence, जरूरी नहीं है, but आप क्या खा रहे हो, that information is there, then it is an accusative structure, right? Ich lese ein Buch, accusative है. Ich esse eine Pizza, accusative है. Ich nehme einen Tee, it's accusative. Ich habe ein Haus, it's accusative. Ich treffe meine Mutter, it's accusative. Yeah? Ich höre alte Musik, that's accusative. But if I say, ich bin Sanju, ich bin 40 Jahre alt, ich wohne in Indien, ich komme aus Indien, these are all nominative, correct? इनमें तो मैं किसी चीज के बारे में नहीं बोल रही हूँ. तो ये तो this is very logical when I'm using verbs in which I'm giving information about something, ठीक है? So that has to be in accusative structure. Okay, good to go. So let's see. This is one of the structure we also have with this verb. essen और nehmen हम नहीं बना सकते without accusative. आपको सिर्फ ये कहना है कि I eat, that's fine. But when you are saying I eat, ich esse ein Brot, that has to be in accusative structure. अब यहाँ पे जबरदस्ती किसी को change नहीं कर सकते, because the rule says if I'm eating any masculine object, then change करो article को. Otherwise, if you are eating a Brot, which is a das article, which is a neutral article, so there is no change. Ich esse einen Kuchen. Of course, Kuchen is a masculine, so you have to change it. Now you have to make it ich esse einen Kuchen. Ich trinke keine Cola, will come to this concept of course as well. Und ich nehme einen Kaffee oder ich nehme keinen Kaffee. When it comes to nehmen or essen or haben or lesen or trinken, ich hören, they all follow the accusative structure. It depends कि आप masculine है object या नहीं है. masculine है तो changes करना है, नहीं है तो नहीं करना है. And if I'm using it in the definite article, for example, I can say ich kenne den Mann. I can also say ich kenne, kennen is a verb to know. Ich kenne den Mann. अब मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर रही हूँ जिसको मैं जानती हूँ, तो मैं मैस्कुलिन में डेफिनेट आर्टिकल लगा रही हूँ. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स ich kenne den Mann. Okay, if I am using it in indefinite article, ich habe I always use Fernseher, I don't know why, but any other masculine objects you can say ich habe einen Fernseher. यहाँ पे मैं किसी दो टीवी की बात नहीं कर रही हूँ. I'm saying I have a TV, so I'm using definite, indefinite. और definite जब मैं किसी एक particular इंसान को आपको बोल रही हूँ ich kenne den Mann, I know the person, I know the man, then I'm using definite article, correct? So accusative is really easy to understand. We'll make, as I have said, we'll make a lot of sentences, and we'll do a lot of exercises also on accusative. I want that you be so good with this concept, and then we will move to the next one. Okay, so this time I have explained to you the accusative nominative structure with definite and indefinite article. In the next session we'll do the exercises, we'll do the negation in the concept of accusative,
and we'll pick up some other interesting topics if we have it from the chapter. Otherwise, we'll finish the grammar concept and we'll go to the book analysis. Okay, so enjoy learning German and learning नहीं करो, उसको बोलो. अभी now you, when you know accusative structure, make sentences. Ich habe das, ich habe das, ich habe lerne das, ich lerne, höre das, ich spreche das, ich lese das, ich trinke das. Go ahead. Okay? So, see you in the next session. Have fun.